नहीं दीनबंधु जगन्नाथे गोपेशे गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये वृंदाई तुलसी देवी प्रियाई केशव सचा कृष्ण भक्ति करे देवी सत्य ते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर साधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री चैतन्य चैतामृत श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस हम लोग श्री गुरुदेव की कृपा से By the mercy of Gurudev और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की and by the mercy of Krishnadas Kaviraj Goswami, विशेष अनुकंपा से by his great mercy, चैतन्य चैतामृत को श्रवण कर रहे हैं we are listening Chaitanya Charitamrita. हमने कल तीसरा अध्याय इस अध्याय को हमने We have समाप्त like किया finished reading the third chapter, चतुर्थ अध्याय को and now we'll श्रवण be करने जा रहे हैं starting to hear श्रीमद् भागवत fourth का chapter. चतुर्थ अध्याय जिसमें बड़ी सुंदर And in this very beautifully, कथा है there is beautiful katha. और मेरे को स्मरण हो रहा है जब And I remember आरंभ की थी तो कुछ भक्तों ने कहा था few devotees said सिद्धांत मत बोलना that don't give too many siddhantas. There'll be too many new devotees in this group, जिससे उनका कुछ इंटरेस्ट हो जाए so they should not lose interest. लेकिन हमने But एक चैप्टर को we finished one chapter, हमने कितने दृष्टिकोण से and in that we understood so many siddhantas. लीला भी आ गई We covered leelas, we covered emotions, सिद्धांत भी था siddhant, सब कुछ था everything. और अभी जो हम अध्याय सुनने And जा रहे now हैं, the chapter we're gonna ये hear बड़ा विशेष अध्याय is very significant, है। विशेष करके नए जो भक्त लोग हैं even for new और जो devotees, पुराने भक्त हैं and including बड़ा the old आनंद उसको devotees. लगेगा। They're both gonna like learn so much from this. ये अध्याय में In this adhyay, in this श्री chapter, माधवेंद्र पुरीपाद जी की Madhvendra Puripad और उनके द्वारा and by him, खीर चोर बताओ भक्त की कैसी महिमा की भगवान का नाम ही बदल दे। it's the mercy of the Bhagwan भगवान that का his नाम है Bhagwan's name गोपीनाथ, got changed. Bhagwan's name, लेकिन श्री माधवेंद्र पुरीपाद Lord's जी name is Gopinath. लीला के द्वारा But through the pastime of उनका नाम पड़ गया खीर चोर। Madhvendra Puripad, Bhagwan's name बड़ी became बड़ी from चोरी सुनते Gopinath to Kheerchor Gopinath. माखन की चोरी करते हैं, Krishna steals butter, गोपियों के वस्त्रों की he चोरी steals करते the हैं, clothes of gopis, लेकिन but खीर भी चोरी करते he, हैं भगवान। he stole kheer as well, sweet rice. इसलिए इस खीर चोरी करने के कारण So उनका this, नाम पड़ गया because of this खीर चोर। stealing pastime of kheer, his name तो सब became लोग बड़े ध्यान से Kheerchor सुनिए, Gopinath from Gopinath. बड़ी सुंदर, So this is a beautiful pastime, बड़ी भावना युक्त, full of emotions, बड़ी सिद्धांत and full, it has lots of siddhant. तो आरंभ करते हैं। Now, so let's start hearing this. श्री कविराज गोस्वामी जी माधवेंद्र नतोस्मि, श्री माधवेंद्र पुरीपाद जी को प्रणाम किया जा रहा है। So here obeisances are being offered to Madhvendra Puripad. जिनको खीर अर्पण करने के लिए खीर के कुल्हड़ की चोरी करके
श्री गोपीनाथ खीर चोर नाम हुआ So Gopinath got the और name of जिनकी Khirchor भक्ति के Gopinath, वशीभूत होकर and he became controlled by श्री the गोपाल bhakti में of प्रकाशित हुए थे Madhavendra Puripad. उन श्री माधवेंद्र पुरी पाद को मैं नमस्कार करता हूँ We offer that Madhavendra Puripad by whose स्वयं bhakti प्रकाशित Krishna manifested as Gopal. कोई भगवान को प्रकाशित नहीं कर सकता Nobody जैसे can सूर्य manifest है Bhagwan. सूर्य को कौन प्रकाशित Nobody करता है can, manifest sun. वो तो दिन प्रकाशित करता है नहीं सूर्य दिन को प्रकाशित करता है Surya, it's दिन सूर्य because of को the प्रकाशित sun. नहीं करता The day comes. The day doesn't भगवान manifest sun. स्वतंत्र So स्वराट है God is independent. भागवत जी के प्रथम श्लोक में He कहा is the king. जन्मदस्य यतः In the अन्वय verses of Bhagavad, अर्थेषु it अभिज्ञ is said स्वराट that भगवान स्वराट मतलब स्वतंत्र राम है अपने Krishna is आत्मा self की रमण satisfied. करने He's वाले Atmaram. लेकिन वे स्व प्रकाशित भगवान को भी सेल्फ मैनिफेस्टेड जो So भगवान even है that self independent God can be manifested by pure devotees. से उनको प्रकाशित करते हैं उनके भक्त And those are pure प्रकाशित करने का devotees. मतलब क्या Here manifestation means भक्तों के कारण ही भगवान की लीला होती है only by pure devotees यदि God's भक्ति ना हो pastimes can take place. तो फिर भगवान की कौन सी लीला होगी If there are no pure devotees, भगवान then there क्या है can't be any pastimes. जैसे भगवान का एक नाम है आत्मराम So God's one name is, Krishna's one name is अपनी आत्मा Atmaram. में रमन करने वाले मतलब That अपने आप में ही रहने वाले he can be, he लेकिन can इसका अर्थ he क्या can हुआ live by himself. What does it mean? भगवान की आत्मा कौन है Who is the soul of Bhagwan? किसको अपने हृदय में धारण Who करते हैं keeps in भगवान his heart? Who राधा keeps जी को Krishna keeps Radha ji in his heart. इसलिए जो अपनी राधा जी में सब समय रमन करते So he's always हैं अपनी प्यारी श्री राधा जी के ही लिए ही समस्त लीलाओं को करते हैं so he manifests all his इसलिए वे आत्मा राम pastimes for the pleasure of Radha ji. हैं उसी प्रकार Similarly, भगवान की समस्त लीलाओं में God's Krishna's कहीं ना all कहीं भक्त pastimes, का उद्देश्य जुड़ा हुआ होता है somewhere it's भक्त the के goal बिना of भगवान pure कोई लीला devotees. नहीं करते Without pure devotees, और Krishna भक्त will भी not भगवान के बिना कुछ manifest any नहीं pastimes. समझ रहे जैसे Like गुरु जी का Gurudev, एक शिष्य के साथ जो संबंध है the relationship he has with गुरु his जी जो कथा disciple, कहेंगे Gurudev, जो what katha he will speak, उपदेश देंगे the instructions he will give, जो प्रेरणा देंगे the inspiration he will give, ये सारी all these किसको दी जाएगी are given to अपने अंतरंग भक्त को his near and dear जिनके disciples, साथ उनकी ममता with है whom he has mamta, जिनके साथ प्रीति और प्रेम priti, है sambandh. इसलिए ये दो प्रकार के So आदेश होते हैं there are two types of गुरु जी instructions. दो प्रकार का Gurudev आदेश gives देते two हैं types of instructions. और गुरु जी की सेवा भी दो प्रकार की And होती है Gurudev's seva is also done in two ways, गुरु जी की सेवा दो प्रकार की कौन सी like एक तो वपु सेवा और Vapu एक seva वाणी सेवा and Vani seva. वपु सेवा मतलब शरीर की सेवा Vapu seva means body seva, उनको स्नान कराना giving bath to Gurudev, उनको तेल मार्दन करना massaging Gurudev, उनके कपड़े धोना washing his clothes, रसोई बनाना cooking for Gurudev, उनको खिलाना परोसना serving prasadam to Gurudev. ऐसे बहुत सारे हैं तो ये है वपु सेवा This is Vapu seva. और एक कैटेगरी है इसको बोलते हैं वाणी सेवा And one is Vani seva. वाणी सेवा का मतलब क्या Vani seva means गुरु जी की वाणी को दोहराना उस वाणी का speaking the प्रचार Vani करना of Gurudev, repeating the words of Gurudev, उनके ग्रंथ जो है उसका प्रचार करना ये है वाणी सेवा preaching the किसी books of किसी के Gurudev. भाग्य में वपु सेवा आती है शरीर की Some सेवा आती है some disciples receive Vapu और गुरु seva, जी जिसको वपु सेवा देते हैं वो उनके बहुत क्लोज होते हैं हर किसी को नहीं दी जाती and Gurudev will not give Vapu seva to जिस everybody. पर विश्वास होता है Those whom he जिस trusts, पर स्नेह होता है those whom he have, जिस पर विशेष ममता होती है mamta, those उसको whom चुना जाता है चयन he, किया जाता है those उससे are chosen disciples of Gurudev. लेकिन वाणी सेवा पर सबका अधिकार है But on Vani seva, everybody has adhikar. कोई भी गुरु जी की वाणी का प्रचार कर सकता Anybody can preach the Vani of Gurudev. है ऑफ कोर्स Of course, गुरु जी की अनुमति लेकर या उनके by the permission of निर्देश Gurudev, से या उनकी कृपा से by his mercy, ये वाणी सेवा होती
only Vani Seva can be ऐसे done. गुरु जी के उपदेश भी दो प्रकार के होते So similarly, Gurudev's हैं, एक instructions are पर्सनल two और एक types. One जनरल। is personal, one is general. पर्सनल मतलब Personal means जो किसी व्यक्ति विशेष को, इंडिविजुअल को which are given to a एक specific उपदेश के लिए individual. आदेश दिया जाता है ना, तुम मेरे लिए ग्रंथ का ट्रांसलेशन करना, You should translate my books for me. तुम वहां पर जाकर प्रचार You करना। should go there and preach. ये सब क्या है? These are पर्सनल personal इंस्ट्रक्शंस। instructions. और एक होता है यूनिवर्सल, And one is universal सबके लिए instruction. बराबर। Universal इसका means नाम for क्या all, जाता है? equal for all. सब हरि नाम करेंगे, Everybody should सब chant. मंत्र जप करेंगे, Everybody should chant mantra. सबको अच्छे से एकादशी करना है, Everybody should fast on सब लोग Ekadashi. चरितामृत पढ़ेंगे। Everybody should read ये सब Chaitanya क्या है? Charitamrit. This is for all. It's universal लेकिन फिर instruction. एक व्यक्ति विशेष, But then is one पर्सनलाइज्ड Vyakti Vishesh, इंस्ट्रक्शन, personal instruction. आप मेरी कथा का प्रचार करना, You preach my katha. आप इस ग्रंथ को You ट्रांसलेट करना, translate this book of आप ये mine. करना। तो इंडिविजुअल जो दी जाती This is individual seva, personal seva. है, और किसी किसी के भाग्य में दोनों प्रकार की सेवा, And some people get those both of सेवा these भी और seva, वाणी सेवा। Vani and Vapu, both sevas of Gurudev. वो गुरु जी की शरीर की भी सेवा करते They हैं serve the body of Gurudev और उनकी वाणी की भी and सेवा his Vani as well. करते हैं। ऐसे ही भगवान भी अपने भक्त के आगे, Similarly, Bhagwan भगवान स्वतंत्र है, स्वराट is राजा, independent. He's like a स्वतंत्र king. है, लेकिन स्वतंत्र होने पर भी वह अपने भक्तों के अधीन है। But still he's controlled by his कहते हैं pure अहम devotees. भक्त पराधीन, Aham Bhakta भयं स्वतंत्र Pradai. प्रजा। मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ I'm controlled by my devotees. I'm not independent. और इसलिए भक्त के कारण ही मेरी लीला होती है। And through devotees only my और ये pastimes जो can कथा आप take सुनने place. जा रहे हैं, श्री माधवेंद्र पुरी बात, Now Madhvinda कौन है Puripad, ये माधवेंद्र who पुरी is बात? he? देखो नाम होता है माधवेंद्र पुरी, Madhvinda और आप Puri. अगर पाद लगाते हैं तो बड़ा सम्मान सूचक होता है। Pad is means giving respect. श्री माधवेंद्र पुरी बात, His name is Madhvendra इनका नाम तो है Puri. सम्मान And सेवा Pad आदर means to से give करें। respect to Madhvendra Puri. So we must क्योंकि take हमारी his गुरु name with परंपरा, respect. भले ही कृष्ण हईते चतुर्मुख, हे कृष्ण सेवन मुख, ब्रह्मा हईते नारदेर मति, नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यासदास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ गति। ये गुरु परंपरा हमारी कहाँ से आरंभ होती है? From where our Guru Parampara starts. कृष्ण, भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को मंत्र दिया, Bhagwan Krishna gave ब्रह्मा mantra जी to ने Brahma नारद जी ji. को दिया, Brahma ji gave it to Narad ji. नारद जी ने वेद व्यास जी And को Narad दिया, ji gave it to Ved Vyas श्री Dev ji. वेद व्यास जी से And Ved लेके Vyas Dev श्री माधवेंद्र gave it to Madhvendra Puri. होते जगत में तीन ऐसे व्यक्ति हैं, बस सिर्फ तीन, In this world, there are three devotees, three तीन ही people, ऐसे व्यक्ति हैं जो उस प्रेम का आस्वादन कर सकते हैं। those who can relish this कौन से prem, तीन व्यक्ति? वो तो या taste तो this राधा love. रानी, Radharani, या श्री चैतन्य महाप्रभु, Mahaprabhu, या तीसरे हैं श्री माधवेंद्र पुरी। and third is Madhvendra Puri Pad. तीन व्यक्ति बस, Only three इतना people. ऊंचा जो प्रेम है, This इसका आस्वादन topmost love, ये तीन ही व्यक्ति कर सकते हैं। only these three people इसे can विचार taste. करके देख लो, माधवेंद्र पुरी जी की कितनी महिमा होगी। So this is the glory of Madhvendra Puri Pad. ये बड़ा सुंदर एक प्रसंग है। There is a beautiful pastime here विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी by Bhakti Vigyan Bharati Gosai Maharaj. बहुत सुंदर He is स्वतंत्र explaining, सिद्धांत के साथ इस लीला को कहते थे। he used to explain this pastime with अच्छा, proper, सबसे beautiful पहले इनको प्रणाम Siddhant. किया कि Let's इन श्री माधवेंद्र पुरी बाजी को मैं नमस्कार करता हूँ, first prayers are जिनके offered to द्वारा Madhvendra Puri Pad, गोपीनाथ जी ने खीर की चोरी की for whom Gopinath stole और kheer, जिनके कारण गोपाल and प्रकाशित because of हुए। him Gopal got installed, manifested. अभी मैं इसको डिटेल में नहीं बताता, I can't go in lots तो of आगे detail. आगे सुनेंगे We will hear it क्रम के further अनुसार। as per sequence. जय जय गौर चंद्र जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद,
सबसे पहले ग्रंथकार कविराज गोस्वामी प्रणाम कर रहे हैं किसको? So श्री Kaviraj, महाप्रभु को। जय Kaviraj जय श्री Goswami is गौरचंद्र। offering prayers to फिर Mahaprabhu प्रणाम first. किया किसको? जय नित्यानंद। Then he offered prayers to और फिर Nityanand श्री Prabhu. जय अद्वैत आचार्य जी And को then to प्रणाम Advaita किया। और Acharya. फिर उसके बाद And then समस्त महाप्रभु to के जो भक्त all हैं the associates उनको of प्रणाम। Mahaprabhu, he offered his prayers. क्यों? Why? हरि गुरु वैष्णव Hari Guru तीनेर स्मरण। Vaishnav. तीनेर स्मरण है विघ्न विनाशन, अनायास पावे निज वांछित पूरन। यदि कंप्लीट पैकेज चाहिए कृपा का, If we need the complete तो package फिर of हरि Kripa, mercy, गुरु then और Hari वैष्णव Guru तीनों Vaishnavas. का ही स्मरण और तीनों की ही We सेवा must करनी remember पड़ेगी। all these three and serve all सिर्फ these भगवान three. की सेवा से नहीं Not चलेगा, just by Bhagwan's seva, सिर्फ गुरु जी की सेवा से नहीं चलेगा, our job can't be done. वैष्णव सेवा भी उसमें Only सम्मिलित by होगी। Guru's seva our job ये can't be कैसे done. We होगा? need Hari Guru Vaishnava seva नीलाद्रि गमन of all जगन्नाथ these three. दर्शन, सार्वभौम भट्टाचार्य प्रभु मिलन, ये सकल लीला श्रीदास वृंदावन, विस्तारी वर्णि आछेन उत्तम वर्णन, सहजे विचित्र मधुर चैतन्य विहार, वृंदावन दास मुखे अमृत धार, अतेक तहा वर्णिले है पुनरुक्ति, तब करी वर्णि यदि नाही तेज शक्ति। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। This is beautiful. These are beautiful lines. बांग्ला भाषा जानते हैं, Those who can understand Bengali, इसको सुनने से ही they उनको can समझ आ जाएगा क्या कह रहे हैं। understand just by hearing these बांग्ला lines. भाषा बड़ी मीठी है। Bengali language is very sweet. कह रहे हैं It is said, महाप्रभु का जगन्नाथपुरी, अच्छा, स्थान स्थान पर जगन्नाथपुरी को नीलाचल कहा गया है। at some points, इसलिए आप समझ लें Jagannath Puri is referred as नीलाचल का मतलब क्या है। Nilachal. नीलाचल का So मतलब Nilachal means जगन्नाथपुरी। Jagannath समझ आई? Puri. नीलाचल का मतलब क्या? जगन्नाथपुरी। महाप्रभु का नीलाचल जाना मतलब जगन्नाथपुरी जाना, श्री जगन्नाथ का दर्शन करना और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ उनका मिलन, इन सब लीलाओं का श्री वृंदावन दास ठाकुर ने पहले से ही। वृंदावन दास ठाकुर कौन है? Who is Vrindavan Das Thakur? So you have heard the name of Vyasdev, व्यास जी ने श्रीमद् भागवत जी the Vyasdev who composed Bhagavad Ji. उन्हीं व्यास जी के जो अवतार हैं, And so वही व्यास that जी Vyasdev came वृंदावन as दास ठाकुर Vrindavan Das अवतार आए Thakur और in this उन्होंने Kali Yuga, चैतन्य and भागवत he की रचना composed की। Chaitanya Bhagavat चैतन्य scripture. भागवत मतलब Chaitanya सारी Bhagavat means महाप्रभु की all the pastimes of नवदीप की Mahaprabhu, विस्तार Navdi लीला, pastimes are डिटेल given लीला, in detail. वो चैतन्य भागवत That's में है। Chaitanya Bhagavat. इसलिए यदि किसी को So if someone पूरी चैतन्य महाप्रभु wants की to लीला को know समझना the है, entire pastimes of Chaitanya तो छह Mahaprabhu, ग्रंथ पढ़ने so पड़ेंगे। they need to read the 6 कौन से छह scriptures. ग्रंथ हैं? Those are वो थे 3 ग्रंथ चैतन्य चेतामृत के। 3 फर्स्ट पार्ट, books सेकंड of पार्ट, Chaitanya Charitamrita, first part, आदि second part, लीला, third part, मध्य लीला, Adi Leela, अंत Madhya लीला। Leela, Ant Leela. और And 3 कौन से? चैतन्य भागवत, Chaitanya Bhagavat, आदि लीला, मध्य Adi लीला, Leela, अंत लीला। Madhya Leela, Ant Leela. उसके भी 6। That also has 3 parts. तो 3 और 3 So 6। 3 and 3, 6. तब This संपूर्ण then महाप्रभु की लीला आप लोगों को we समझ can आएगी। understand the complete pastimes of Mahaprabhu, तो Navdi क्या pastimes. श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने So Vrindavan Das जो Thakur, चैतन्य भागवत लिखी, when he composed Chaitanya उसमें Bhagavat, उन्होंने बहुत डिटेल में in that he gave एक आदान प्रदान सब in भक्तों का detail नवदीप लीला का वर्णन Navdi किया। pastimes, थोड़ा सा जगन्नाथपुरी का वर्णन, some of Jagannath Puri लेकिन pastimes. चैतन्य चेतामृत में But in Chaitanya नवदीप Charitamrita, लीला का थोड़ा सा Navdi pastimes are not given in और detail, जगन्नाथपुरी का डिटेल विस्तार but से किया। Jagannath Puri pastimes are given in इसलिए ये detail. दोनों मिलाकर So both संपूर्ण गौर लीला हो जाती है। together become इसलिए बीच Sampurn, बीच में complete देखना God कैसे Leela. कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी So in जिन्होंने between, चैतन्य Krishna's चेतामृत Kaviraj लिखी है, Goswami, who composed वे Chaitanya बार बार Charitamrita, वृंदावन दास ठाकुर को he is प्रणाम करते repeatedly offering prayers कि to कोई ये Vrindavan ना Das समझ ले Thakur, that no one should think कि मैंने उनकी that राइटिंग पर I have ओवर रूल किया है, overruled मैं उनकी his राइटिंग पर writing. कुछ लाइन खींची है, I am not like, या मैंने किसी अभिमान के कारण I have not, मैंने भी गौर लीला का वर्णन किया। or कोई no, I ऐसा have नहीं not समझना। composed the देखो scripture बीच on बीच God में हम Leela out देखेंगे of pride. ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे So जहाँ पर in ये between, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं it और is seen सबको that बतला he's रहे हैं कि देखो requesting कोई अभिमान नहीं करना, and praying with his कोई hands, गलत नहीं सोचना, folding his hands and saying, please don't take me wrong. गलत I'm not सोचने doing में any, एक I'm not स्ट्रोक having मैंने any था pride और for ठीक writing सोचने this में scripture. साल कितने वर्ष लग जाते हैं, है ना। नेगेटिव थॉट आने में Negative कितनी देर लगती thoughts, है?
don't take a long time to come in our mind. They come very easily. 30 seconds. Maybe less than that, 10 seconds. But good thoughts, that's a struggle. It can take ages. Yesterday here I was speaking this Harikatha where I'm right now. I was saying that how many people, those who are at gross level, they even take positivity as negativity. Those who are at gross level, stool drishti, gross vision, they even take positivity as negativity. But those who are at advanced level, mature, and those who have subtle vision, they even see positivity in negativity. So there is a phrase in English, even a stop clock gives correct time twice a day. A stopped clock gives correct time twice a day. What does it mean? A, a wall clock which has stopped, it stopped at 9:30. Now we say the clock is useless, but there is a quality in it. That's it. That is, in a day twice it will show the correct time. Once morning, once evening or night. So it's like seeing positivity and negativity. Do we all have this kind of vision? But those who are advanced in bhakti and bhajan, they have a different vision, angle to see the world. Everybody is not at the same level. In Chaitanya Charitamrita Harikatha, around 150 people hear it on Facebook, Zoom together. 150 people. Some everybody will not understand, from the same angle. Everybody hears as per their own capacity. Somebody hears with a challenging attitude. Oh, let's see what Maharaj is speaking today. Which katha he is giving? Let me see. Somebody have this consciousness. Some people have this consciousness. Oh, let me hear. What else is there in Chaitanya Charitamrita? If I read by myself, I might not understand. So someone has inquisitiveness, someone has love, someone has asakti, and someone have no faith. We don't have faith in Mahaprabhu. What kind of sannyasi are these? They dance and they jump. Everybody has their own intelligence and point of view. Everybody is not equal in consciousness and vision. Some people say, oh, Guruji is speaking Harikatha, so we must definitely hear because there is attachment for Gurudev. Gurudev, I have kept you in my heart. Gurudev says, take me out of your heart. Don't just keep in your heart. Will you keep me in your heart all the time? So how will you hear? How will you learn from your Gurudev? Krishnadas Kaviraj Goswami, in the beginning, he gave an introduction. इन सब लीलाओं का वृंदावन दास ठाकुर ने बड़े विस्तार से अपने ग्रंथ में वर्णन किया है. महाप्रभु की लीला स्वाभाविक रूप में मधुर और विचित्र है. Mahaprabhu's pastimes are sweet and astonishing.
इतनी सुंदर चैतन्य So लीला people wrote to हमने me कभी नहीं and they सुनी। said, Maharaj, we have never heard such beautiful हाँ, pastimes of इतनी उसमें Mahaprabhu. ममता है सच्ची There's so माता much की। mamta of Sachimata. कैसे महाप्रभु जी How सब भक्तों के Mahaprabhu, साथ with गले all लगकर his विदाई दे रहे हैं। disciples, आहा, कहने बड़ा आनंद आ गया। hugged, इसलिए all गौर disciples लीला of बड़ी Mahaprabhu कैसी hugged मधुर Mahaprabhu. और So बड़ी God Leela विचित्र भी है। is strange सुनेंगे आगे। and it's परंतु श्री beautiful. वृंदावन दास ठाकुर के मुख से निकलने पर तो वे अमृत की धार के It समान has become like Amrit, nectar, किसके मुख by से? coming from the वृंदावन दास lotus ठाकुर mouth of जिन्होंने क्या लिखा है? Vrindavan Das Thakur, चैतन्य भागवत। with the one who has composed और ये Chaitanya कौन लिख रहा है Bhagavat. अभी? And who is कृष्णदास writing कविराज now? गोस्वामी। Krishnadas Kaviraj Goswami. कोई ये ना सोचे Don't think उन्होंने गौर लीला लिखी तो मैंने भी गौर लीला लिखी, इसमें कोई कंपटीशन है। they don't think there's competition ये between competitive these two. spirit नहीं है This यहाँ। is not the competitive spirit of ये competition Krishnadas वाली बात Kaviraj नहीं है। Goswami. दोनों को ही आदेश हुआ है गौर Both लीला were लिखने का। instructed to write Gaur Leela. वृंदावन दास ठाकुर को भी और Vrindavan श्री Das कृष्णदास Thakur was कविराज also को instructed, and Krishnadas Kaviraj Goswami was also instructed. भी। गौर लीला अपने आप में मधुर है, Gaur Leela is लेकिन जब कोई sweet, भक्त उसको but when a devotee कहता है, सुनाता है, speaks it or तो कैसी हो hears it, जाती है? then it becomes और मधुर हो जाती है। more जैसे beautiful, more nectarian. आप Like लोगों ने कभी ऐसे किया नहीं होगा। you might not have done पेड़ this. पर आम लगता है ना, There are mangoes on उस the आम को tree. कभी तोड़कर खाया? Have you ever taken mangoes नहीं, from सब the लोग tree and बाजार में eaten it? मार्केट में स्टोर में खरीद के खाते हैं। No, we go to the market, buy from the कुछ लोग market, कह रहे and हैं then हमने एक eat बार it. तोड़ के खाया। वो वृक्ष से निकला हुआ जो आम होता है ना, The वो बड़ा mango मीठा होता है। fruit from the tree, कितना directly from मीठा the होता है। tree, is more sweeter. कहाँ से खाओ कहाँ छोड़ो उसको पता नहीं लगता। We think from सब where to खाओ eat and और from वो where to मधुर। leave it, and we can't understand. It's sweet from all sides. आम अपने आप में इतना मीठा होता है, So लेकिन mango उसमें is यदि एक so तोता sweet. अपनी But चोंच if लगा a देता है, parrot मुंह touches लगा देता है, its by its तो वो beak, आम कैसा हो जाता है? then mango और becomes मधुर और मीठा हो जाता more sweet, more sweeter, more है ना? sweeter. इसलिए हमारे आचार्य बताते हैं, So acharyas say आम के पेड़ पर ठीक जैसे इधर आम है, इसके ऊपर डाल पर on the branches of the mango यदि tree, कोई गिद्ध बैठता है ना, गिद्ध if समझते हैं इंग्लिश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ईगल। if an यदि गिद्ध eagle बैठता है, sits, उसके पैर के नीचे ही आम है, वो आम नहीं खाता। it has a mango fruit beyond below its जहाँ पर बैठा feet, उसके नीचे आम है, वो आम नहीं खाएगा। but the eagle will not eat it गिद्ध की रुचि किसी और because चीज में है। the eagle is interested in गिद्ध something अगर else. देखता है क्या मिलेगा, It will look कहीं here घास and मिल there जाए, and it will look for some meat, कोई मरा हुआ dead कोई animal, पशु कोई जानवर मिल a जाए, bird. मांस मिल जाए, उसको खाऊंगा। I will eat that. अच्छा, उसी आम के पेड़ पर And on the same mango यदि tree, कौवा बैठ if जाए, there is a crow, कौवा समझते हैं क्रो, तो उसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? where it will look कहीं at? कूड़ा On some कचरा garbage. ये कहीं मिल जाए, उस गंदगी में बैठना It उसको will पसंद hanker, है। crow will hanker for some garbage, crap. उसी आम के वृक्ष पर यदि शुक्र And on the same mango tree, अर्थात if there is a शुक्र मतलब parrot, तोता यदि shuk, बैठता है, shuk means parrot, तो वो आम को चखता है और it जैसे ही will तोता taste the उसको mango. चोंच लगाता है, And the तो moment it वो will taste it, the mango fruit will ये become more स्वभाव है, tasty. That's the nature. ये एक स्वाभाविक एक क्रिया है, It's natural, नेचुरल है। natural ये कहते हैं गॉड गिफ्टेड है। action, God gifted. It's very much भगवान की God देन। gifted. It's the ऐसे ही महाप्रभु की लीला अपने आप में बड़ी मधुर similarly है, Mahaprabhu's pastimes लेकिन are वो in इतनी itself भक्त beautiful, श्री वृंदावन दास but ठाकुर his pure या कृष्णदास devotees कविराज like गोस्वामी जी Vrindavan Das उसकी जब Thakur बखान or करते हैं, Krishnadas तो Kaviraj और Goswami, कैसी हो when they जाती है? speak मधुर it, हो जाती then है it becomes more और मधुर sweet, हो जाती more sweeter. है। इसलिए कह रहे हैं, So it is उन said, लीलाओं का पुनः वर्णन करने से by दोहराना speaking those पड़ेगा, pastimes पुनरुक्ति again, होगा। और यदि दम करके मैंने उनका वर्णन करना भी चाहूं, तो मुझ में ऐसी शक्ति नहीं है। समझ आ रही है बात? कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, Krishnadas Kaviraj उन Goswami लीलाओं is को मैं क्या saying, वर्णन करूं? what can I speak of those वो तो पहले से pastimes? वृंदावन दास ठाकुर They ने are already वर्णन कर दी। composed by Vrindavan Das और Thakur. यदि मैं करूंगा, And even if I try, तो मेरे को दोष लगेगा then I might get कि मेरे अंदर अभिमान है, a मैंने इसलिए लिखा है। dosh, like और a दूसरी बात, fault, उन मधुर लीलाओं that पर I लिखने की have done मेरी it शक्ति नहीं, out of मेरा बल नहीं। sense of pride. ये कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं, अपनी दीनता दिखला रहे हैं। So Krishnadas Kaviraj Goswami is showing his कह रहे humility. चैतन्य मंगल Chaitanya जहाँ करिए Mangal, वर्णन, सूत्र रूपे से लीला करिए सूचन।
तारे सूत्रे आछे तेहो न कैल वर्णन यथा किंचित करी से लीला कथन। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपने ग्रंथ चैतन्य भागवत में जिन लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है उन लीलाओं को मैं संक्षेप में लिखूंगा। So Krishna's Kaviraj Goswami is saying in advance मैं उनको that ब्रीफ में संक्षेप I'll में write लिखूंगा, in brief, विस्तार नहीं करूंगा, not in डिटेल नहीं detail, करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी पहले because से वो लिख already चुका है। they are written by Vrindavan Das Thakur. जिन लीलाओं का उन्होंने सूत्र रूप से वर्णन किया So है he has given in detail या फिर जिन Vrindavan Das लीलाओं का Thakur. उन्होंने वर्णन नहीं किया है उन सबको मैं अपने समर्थ के अनुसार And those मैं which डिटेल में Vrindavan विस्तार Das से Thakur has not वर्णन करने given की चेष्टा करूंगा। in detail, I will try दीनता to है give description in detail for those श्री वृंदावन दास pastimes. जी This is the कृष्णदास humility कविराज of Krishna's गोस्वामी Kaviraj इतने सुंदर Goswami. लाइन में लिख रहे हैं। In beautiful lines, words, he has composed this prayer, these फिर से सुनो verses. Let's कैसे hear उन्होंने it भावनाओं again. को लिखा। How he composed his उन्होंने जिन लीलाओं emotions. को वृंदावन The दास ठाकुर ने pastimes which वर्णन Vrindavan किया Das Thakur has composed सूत्र रूप में, in सूत्र रूप में मतलब ब्रीफ में, in brief. उनको तो मैं विस्तार से डिटेल में वर्णन करूंगा Those I will जितना explain मैं in समझ detail, सकता हूँ, जितनी मेरी शक्ति है उतना ही, howsoever I can understand, इससे ज्यादा नहीं। not more than that. इसलिए So मैं उन श्री वृंदावन दास ठाकुर के श्री चरणों में I pray at the lotus feet of दीनतापूर्वक Vrindavan Das नमस्कार Thakur करता हूँ with humility, जिससे उनके चरणों में so मेरा कोई that अपराध न हो I जाए। don't commit any offense at his lotus स्पष्ट रूप feet. से कह रहे हैं, मैं उन वृंदावन He's दास saying ठाकुर it के चरणों में clearly. मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा अपराध न हो जाए कि मैंने ऐसा May नहीं I किया। not commit any offense at his lotus feet. श्रीमद् महाप्रभु चलीला लीलाचले चारि भक्त संगे कृष्ण कीर्तन कुतूहले। इस प्रकार महाप्रभु ने So चार in भक्तों this के way, साथ Mahaprabhu उत्कंठा पूर्वक श्री कृष्ण moved नाम to का कीर्तन करते हुए Nilachal with the four of नीलाचल his की ओर प्रस्थान disciples किया। कौन से चार by भक्त थे? performing नित्याम प्रभु, Kirtan. मुकुंद There was दत्त, Nityan Prabhu, Mukundat Prabhu, दामोदर पंडित Damodar Pandit, and और अच्छा आप लोगों की आवाज मेरे पास नहीं आ रही। ये चार भक्तों के साथ there were four महाप्रभु जी devotees जगन्नाथपुरी जा रहे हैं ना। with whom Mahaprabhu moved to महाप्रभु Jagannath स्वयं Puri. एक एक दिन एक एक ग्राम में भिक्षा मांगने के लिए जाते Mahaprabhu would और go बहुत से for चावल दाल आदि ले Madhukari आते। and he would bring dal chawal. क्या करते महाप्रभु? एक एक गांव में रुकते और भिक्षा मांगते। He would go from village to village. महाप्रभु भिक्षा मांगेंगे तो कोई थोड़ा सा देगा, सब इतना देने लगे। पथे बड़ा बड़ा दानी भिक्षा ही पड़े। And people would not give give grains to Mahaprabhu in less quantity. They would give in huge quantity. मार्ग में अनेक स्थानों पर बड़े बड़े दानी मतलब अर्थात पथ पर संग्रह करने वाले बलवान व्यक्ति थे, परंतु किसी ने भी महाप्रभु को रोककर कर नहीं लिया। कर मतलब होता है टैक्स। Nobody took tax from Mahaprabhu. अभी आजकल जैसे इजी पास Now these days, there's toll tax in these days. Earlier, गाड़ियों के लिए नहीं, there was tax even for those who would come from the forest on foot. So at different places there was a tax collection point. Tax collectors were there. But nobody stopped Mahaprabhu. Nobody took tax from Mahaprabhu. Mahaprabhu gave mercy to all of them. And he came to Remuna. Mahaprabhu came to Remuna. Where is Remuna? It's in Odisha, near Jagannath Puri. At Remuna, Shri Gopinath ji, Mahaprabhu took darshan of Gopinath ji with bhakti bhav. Which Thakur ji? Shri Gopinath. Who has been to who have been to Remuna, who have seen Gopinath ji? Maharaj is asking actually to all the disciples. Mahaprabhu with bhakti bhav took darshan of Gopinath ji. Mahaprabhu went to the lotus feet of Gopinath ji and offered prayers, obeisances. That at that moment the mukut fell from Gopinath and fell on
uh, गोपीनाथ जी का दर्शन करने गए, Mahaprabhu took the darshan of Gopinath ji, महाप्रभु जी ने उनको प्रणाम किया, offered prayers to him, pranams to कौन किसको Gopinath. प्रणाम कर रहा है? Who is offering prayers to कृष्ण whom? ही कृष्ण को Krishna प्रणाम is कर रहा है। offering prayers to कैसी Krishna. विचित्र बात है। This is so strange. महाप्रभु कौन है? Who is Mahaprabhu? कृष्ण है। He is Krishna. गोपीनाथ जी कौन Who है? is Gopinath? वो भी कृष्ण है। That's also Krishna. तो कौन किसको प्रणाम So कर रहा who है? is offering prayers to whom? Who is कृष्ण ही offering pranam to whom? कृष्ण को Krishna is प्रणाम कर offering रहे हैं। pranam to Krishna. लेकिन महाप्रभु जी राधा जी के भाव But को लेकर Mahaprabhu is with Radha कृष्ण Bhav. को प्रणाम कर रहे हैं। With ये Radha अंतर है। Bhav, Mahaprabhu is offering pranam to Krishna. This is लेकिन the उस समय एक difference. आश्चर्य हुआ। But that in that moment there was a गोपीनाथ strange जी का जो सिर पर thing. मुकुट था, The mukut कौन सा मुकुट? on the head of पुष्पों का मुकुट, Gopinath, mukut of वो throne of गिरकर flowers, महाप्रभु के मस्तक पर it गिरा। fell from Gopinath and fell on the head of Mahaprabhu. ऐसे This, बहुत like, से उदाहरण there are so many examples like this. ठाकुर जी का दर्शन करने गए, He took darshan of राधा Thakurji, कृष्ण का दर्शन करने गए, Radha राधा Krishna's जी के हाथ darshan, से माला गिर जाती and the garland fell from Radha ji's hand, है, या भगवान के गले से माला गिर जाती or है। a garland falls इसका from the मतलब क्या? garland of Bhagwan Krishna. इसका मतलब What does it mean? कोई It, वहां पर it means एक इशारा that है, there एक is a इंगित है, sign, indication, एक क्लू है। clue. इसका मतलब गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न हैं। Gopinath ji is very happy. चूड़ा पाइया महाप्रभु आनंद आनंदित मन, बहु नित्य गीत कैला लैया भक्तगण। उस पुष्प मुकुट को पाकर महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ। Mahaprabhu was साक्षात very गोपीनाथ जी के सिर happy से गिरा है। attaining that pushp और कहाँ गिरा है? सीधा throne महाप्रभु जी के पास गिरा। and directly came on the head of Mahaprabhu. महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ Mahaprabhu is full of bliss, और वे anand, भक्तों के साथ joy. मिलकर So, and with his नृत्य कीर्तन disciples, कर रहे he हैं। performed nritya kirtan, महाप्रभु dance भक्तों के and साथ kirtan जोर जोर से कीर्तन कर रहे हैं। महाप्रभु loudly. के अलौकिक भाव, Seeing the alokik उनका श्री bhav कृष्ण के of प्रेम में Mahaprabhu, उनके रूप गुणों को देखकर गोपीनाथ के सेवक विस्मित हो गए। so seeing the bhav, महाप्रभु का जैसा emotions, कीर्तन चल रहा था, जैसे kirtan नृत्य of चल रहा था, Mahaprabhu, the sevak, महाप्रभु का servants जो of रूप Gopinath देखा, got shocked. कैसा रूप है महाप्रभु का? Mahaprabhu's roop तप्त is कांचन। Tapta Kanchana. तप्त कांचन मतलब Tapta Kanchan means पिघला हुआ सोना, melted गोल्डन गोल्ड। gold, melting gold. सोना कितना So gold चमकीला होता है, is लेकिन सोने को जब पिघाल shines, दिया जाए gold shines so much, तो वो and when कितना you melt it, तेजवान it, होता है। it becomes more shining. महाप्रभु जी उसी प्रकार ऐसे Mahaprabhu जैसे is एक just सोना like ही that. हवा में है और वो सोना नाच रहा है, Like gold is in the air and that gold is dancing. और फिर महाप्रभु के And then Mahaprabhu, भाव भी, भाव कैसे? Mahaprabhu's आंखों से अश्रु emotions, बह रहे हैं। like ये his सब emotions are देखकर like tears जो coming from his गोपीनाथ जी के eyes. सेवक Seeing सब all विस्मित हो this, गए। the servants of Gopinath were उन in सेवकों shock. ने अनेक प्रकार से प्रीतिपूर्वक They महाप्रभु की सेवा की। served Mahaprabhu with priti, महाप्रभु love. ने वह रात श्री Mahaprabhu गोपीनाथ मंदिर में ही बिता दी। spent the night at Gopinath यहाँ temple. पर इसका ये वर्णन हुआ। It's explained उसके over बाद here. Later on, धीरे it is धीरे said देखो सस्पेंस gradually, बढ़ रहा है now suspense is और उसके आगे increasing, बड़ी सुंदर बात है। and there is a beautiful pastime ahead. महाप्रसाद खीर लोभे रहीला प्रभु कथा, पूर्वे ईश्वरपुरी तारे कई आछिन कथा। अब यहाँ से ये स्टोरी आरंभ होती है। Now a अभी तक तो story starts इंट्रोडक्शन from था, here. Till now it was सबको introduction. बात समझ आ रही होगी। I hope everyone is understanding the तीसरे अध्याय में हमने pastimes. सुना, In third adhyay, थोड़ा सा रिकैप third करता हूँ। chapter, let me recall, महाप्रभु जी recap. कहाँ जा रहे थे? Where was Mahaprabhu going? महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे Mahaprabhu was going to Vrindavan, और नित्यानंद प्रभु ने and क्या Nityan किया? Prabhu tricked Mahaprabhu to महाप्रभु का रास्ता बदल दिया। Shantipur. He तो changed महाप्रभु his जी गंगा जी way. के किनारे चलते चलते So शांतिपुर Mahaprabhu में पहुंच गए। came to वहां Shantipur. पर श्री अद्वैताचार्य जी There Advaitacharya महाप्रभु जी के लिए सूखे वस्त्र arranged लेकर आए। dry clothes for Mahaprabhu. सची माता और नवदीप के सारे भक्त वहां पर आए। Sachi Mata came with all महाप्रभु disciples of अद्वैताचार्य के Navdeep. घर में रहे। Mahaprabhu stayed at the house of सची माता Advaitacharya. से मिलन हुआ। Sachi Mata's meeting सची took माता ने place here. उनको Sachi Mata उनके लिए रसोई बनाई cooked for और सब Mahaprabhu भक्तों के लिए रसोई and for बनाई। everyone. और ऐसे करते करते And महाप्रभु अब gradually Mahaprabhu, निष्ठुर होकर now Mahaprabhu सची माता को छोड़कर सब भक्तों को छोड़कर departed जगन्नाथपुरी जाने लगे। and he moved to लेकिन जब जगन्नाथपुरी Jagannath जा रहे Puri. हैं, But on the way to रास्ते Jagannath में Puri बाट में एक स्थान came पड़ता है Remuna, जिसका नाम है रेमुना। Remuna, उस स्थान पर a महाप्रभु place जी ने where Mahaprabhu दर्शन किया।
took the darshan of Shri Gopinath Ji. जो गोपीनाथ जी का दर्शन किया तो गोपीनाथ जी के सिर पर जो एक पुष्प का मुकुट होता है, And while taking darshan of Gopinath Ji, the flower throne of Gopinath Ji fell on Mahaprabhu. So one is gold throne made of gold. One is more mukut, और फिर यहाँ पर throne of peacock वर्णन आया वो कैसा है feather. पुष्प का। And here the throne is of तो flowers. जगन्नाथपुरी और So उड़ीसा Jagannath क्षेत्र Puri में and Odisha, ये एक बड़ा सुंदर एक there is श्रृंगार है a beautiful Shingar जहाँ पर ठाकुर जी को where Thakur Ji, Bhagwan, पुष्पों का मुकुट बनाया जाता है, इतना बड़ा ऐसे is offered a flower throne. पुष्प का मुकुट होता है। It's full of just महाप्रभु जी flowers. ने प्रणाम किया, Mahaprabhu offered वो prayers, मुकुट pranam, महाप्रभु जी के ऊपर आकर गिर and that गया। mukut throne fell on महाप्रभु Mahaprabhu, ने उस मुकुट को and Mahaprabhu धारण करके बड़े accepted आनंदित हुए that कि throne गोपीनाथ with जी ने एक respect, सिग्नल दिया। and he was happy that सिग्नल Gopinath समझते Ji हैं? gave me a signal. Signal एक means इशारा दिया, एक one इंगित दिया sign, one clue. कि गोपीनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए किसको Gopinath Ji is देखकर? very happy to see Mahaprabhu. सिग्नल समझते हैं, This is signal, इशारा समझते हैं। ishara. जैसे श्री कृष्ण के रूप का वर्णन आता है, Like क्या बोलते हैं? वरहा पीडम Krishna is explained as Varha Pidam. कर्ण्यो कर्णिकारम The roop of Krishna is चित्रवासु described कनकपिशम like this. वैजंती समालम गंधया वेणुधर सुधया पूर्ण गोपवृंदे वृंदारमणम सपदरमणम प्राविशदा गीत के। श्री कृष्ण के रूप का वर्णन आता है, Krishna's beautiful नहीं form जाता is explained. थोड़ा सा। श्री कृष्ण अपने सिर पे कौन सा मुकुट धारण करते हैं? Krishna carries which throne? मोर मुकुट। More mukut, more और throne. कानों में क्या है? And in his ear is कर्णिका के पुष्प। Karnika flowers. कर्णिका एक फूल है, श्री कृष्ण उसको धारण करते हैं। कैसे? How he carries those flowers on his ears, not on both ears. कभी एक कान में, Kabhi, कभी इस कान में, sometimes one ear, कभी इस sometimes कान other ear, sometimes this ear, sometimes that ear. Why? Why? में। क्यों एक कान पे धारण करते हैं? Why just in one ear he क्योंकि carries साथ में चल रहे Karnika हैं flowers? बलराम जी, बलदेव जी। Because next to him बलदेव जी is के बड़े Baldev भैया। Ji, and Baldev Ji is elder brother. Baldev Ji is Krishna's श्री elder बलदेव जी brother. कौन है? कृष्ण के बड़े भाई। और कृष्ण बलदेव दोनों भाई And Krishna and Baldev, both brothers, they go for cow grazing in the forest daily. और गोपियों को एक संकेत देना है। And गोपियों Krishna को wants to एक give a संकेत sign, देना है। clue, इंग्लिश में बोले सिग्नल देना है signal to gopis कि मैं आज कहाँ that मिलूंगा। today where will I meet you? I'll तो meet you सारी in बातें that तो direction. नहीं कही जा सकती क्योंकि Everything बलराम can't जी be के साथ said चल रहे हैं। because Balram ji is तो next इस to कान Krishna. में So फूल लगाकर कर्णिका का पुष्प लगाकर Krishna will put ears in one ear. Sorry, he will put flower earrings in one ear so एक that इशारा it would मिल give जाता a है कि आज sign मैं इस डायरेक्शन to में मिलूंगा। gopis that today I'll come in this तो तुम लोग direction. सब इस डायरेक्शन So में you आओ। all wait for me in this direction. इधर लगाते हैं, हाँ इधर लगाते हैं तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में मिल जाता है। गोपियों को संकेत मिल जाता है, Gopis get the sign क्यों? मर्यादा है ना, because there is बलराम जी से Maryada. Balram ji is with Krishna. इसलिए यहाँ पर गोपीनाथ जी ने भी महाप्रभु जी को देखकर प्रेम का एक संकेत दे दिया। So here Gopinath ji also gave his prem signal to Mahaprabhu. अब देखो यहाँ तक हम लोगों ने सुना, इसके आगे क्या? यहीं पर महाप्रभु ने अपने गुरुदेव, Here Mahaprabhu, गुरुदेव कौन है? who is the Gurudev of Mahaprabhu? ईश्वरपुरी। Shri Ishwar Puripat. पहले स्वयं उनको खीर की महिमा बतलाई थी। महाप्रभु जी के गुरु जी ईश्वरपुरी पाद जी ने महाप्रभु को यहाँ की महिमा बतलाई थी कि यहाँ Okay, initially Ishwar Puripat explained the glories of पर खीर चोरी हुई थी। this place to Mahaprabhu. किसने खीर चोरी की? Who stole the kheer? खीर चोरा गोपीनाथ Kheer प्रसिद्ध Chora कारण। Gopinath. भक्त गणे कहे प्रभु सहित आख्यान, पूर्वे माधवपुरी लागी खीर कैला चोरी, अतएव नाम आइलो खीर चोरा हरि, पूर्वे श्री माधवपुरी आइला वृंदावन, भ्रमिते भ्रमिते गीला यथा गोवर्धन। कितनी सुंदर भाषा में वर्णन किया गया। इसका अनुवाद, इसका मतलब क्या? It means गोपीनाथ जी Shri कैसे खीर चोर गोपीनाथ के नाम से प्रसिद्ध। इस कथा को
को सुनाए। देखो महाप्रभु अपने मुख से अपने भक्तों को गोपीनाथ जी की कथा सुना रहे हैं, उनकी महिमा सुना रहे हैं Mahaprabhu कि is इनका नाम telling खीर to his चोर कैसे हो disciples गया, about खीर को चोरी करने वाले। Khir Gopinath. He's the one who तो stole the kheer. सुनेंगे सब लोग इस कथा So को, let's hear this pastime. सुनना चाहेंगे आप लोग? हाँ, ये महाप्रभु जी सुना रहे हैं अपने भक्तों को। पूर्व काल में श्री गोपीनाथ ने अपने भक्त श्री माधवेंद्रपुरी के लिए खीर की चोरी की थी। In previously, इनका नाम खीर चोर गोपीनाथ हो गया। Gopinath stole kheer for Madhya कृष्ण बड़े Pad, so प्रसिद्ध हैं, his बड़े name became फेमस हैं Khir ब्रज Chor में। Gopinath. क्या बोलते हैं? ब्रजे प्रसिद्धाम नवनीत छोरम। Krishna is famous for किस stealing बात in की Braj. प्रसिद्धि है? फेमस है He's famous for माखन चोरी butter stealing butter, और अनेक जन्म चित पाप छोरम। and he steals हमारे जन्म जन्म our के पापों को भी चोरी करते previous हैं। sins from many या फिर प्रार्थना करते हैं births. आप हमारे पापों को चोरी कर लो। Or devotees pray like, please you steal my और कृष्ण all चोरी क्या करते हैं? sins. And Krishna also steals our. गोपियों के वस्त्रों को चोरी। Oh, he also steals the clothes of जमुना में gopis. सारी गोपियां स्नान कर रही थी, When at Jamuna कृष्ण के ji, सारे वस्त्र the चुरा कर gopis ले were गए। going for a bath, Krishna stole all their अब इससे clothes. भी ऊपर की कैटेगरी And there's सुनेंगे, one more category above all these. सबके हृदय की चोरी कर लेते He steals everyone's heart. हैं। ये बात समझ आती है? किसी का हृदय चोरी करने का मतलब What क्या does it जानते mean, stealing someone's heart? हैं? इन्होंने मेरा हृदय चोरी कर लिया, He मतलब stole अब my मेरा heart. हृदय मेरा नहीं रहा, Now my heart doesn't belong to अब ये me. उनका हो गया। Now it's Krishna's. इसलिए मेरे जो थॉट, मेरे So जो my thoughts, स्मरण, my remembrance, मेरा जो विचार, मेरा जो my चिंतन, consciousness, my meditation, अब सब उसका ही होगा everything जिसने ये चोरी कर ली। is of Krishna, the one who stole my heart. जैसे Like भगवान ने वंशी बजाई, Krishna played the flute. जब वंशी बजाई सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आ गई। All gopis came running to Krishna. सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई। क्यों दौड़ी आ गई? तो इसका एक समझने का एक उदाहरण समझो। आपकी जेब में एक क्या है? पर्स है। There is a purse in your pocket, और एक चोर ने उस पर्स को चोरी and his करके thief भाग stole गया। that purse and he ran आपके सामने चोरी करके in भाग front गया of आपकी you. जेब से। तो आप क्या करेंगे? What will you do? उसके पीछे भागेंगे, You will run behind the thief. अपना पैसा को, अपनी संपत्ति को वापस लेने के लिए। You want to, regain your property, your money. Similarly, gopis did the same. हृदय में भगवान के लिए जो प्रेम है, Gopi's heart had love for Krishna. उसकी चोरी हो गई। That was stolen. हृदय की तो चोरी कर ली, The heart was stolen. उस प्रेम को भी चोरी कर रहे हैं। कौन? So Krishna is stealing that prema as well. वंशी बजाई, By playing गोपियों Vamshi, ने सुनी gopis और heard, उनके हृदय में जो प्रेम था and उसकी the चोरी हो गई। love in their heart got stolen. और जब प्रेम की चोरी हुई तो गोपियां सब दौड़ी दौड़ी कृष्ण के पास आ That's why Krishna. That's why gopis, all गई। gopis इसको बोलते came हैं हृदय running की towards चोरी करना। Krishna when that prem और was उस also हृदय में जो stolen. प्रेम है उसकी चोरी की। किसने? भगवान ने। Bhagavan किसके did हृदय that. की प्रेम की चोरी Whose की? heart's श्री राधा prem? जी के प्रेम। Radha ji's heart's prem. राधा जी ने अपने हृदय में, Radha ji हृदय in समझते her हैं? heart, कोई लोग बोलते हैं दिल, कोई बोलता है हृदय, कोई बोलता है हार्ट। Radha ji in her heart has love for Krishna. राधा जी ने अपने हृदय में, और उस हृदय के अंदर भी, हृदय भी जैसे समझ लो इतना होगा, इतना मुट्ठी भर होता है। Our heart is उसके अंदर the size एक of our केव palm. है, एक गुफा है, There is a cave in that जहाँ पर heart हम where किसी को छिपा कर रखते we hide somebody हैं और in किसी that को नहीं cave, पता लगने देते and we don't let कि उस anyone know गुफा में हमने किसको that छिपाया। whom we have kept in that cave of our राधा heart. जी ने अपने Radha उस ji in her हृदय cave, की कंदरा in मतलब the गुफा heart में of our cave, in the एक cave of our बहुत heart, sorry, मूल्यवान, has kept बहुत प्रेशियस very precious एक डायमंड छुपा रखा है। diamond. वो क्या है? What is that? प्रेम। Prem. वो राधा जी किसी को नहीं That दिखाती, Radha ji doesn't वो show राधा जी to किसी को anybody, प्रकाशित नहीं करती। doesn't ये उनकी express it दिखाने to की चीज होता है। everybody, because love is not for ये सबके सामने display. प्रकाशित करने वाली चीज नहीं होती, ये छिपाने वाली चीज होती It's है। about hiding. क्योंकि इसको अगर प्रकाशित कर दिया Because जाए if you show love to all, तो इसकी महिमा ही समाप्त then हो जाए, its glories are इसकी इम्पोर्टेंस decreased, ही खत्म हो जाती importance gets reduced. है। इसको छिपा कर रखना पड़ता So one has to hide है। their जैसे love. विष्णु चक्रु ठाकुर जी ने Like एक Vishwanath उदाहरण Chatri दिया। Thakur gave an example. एक दिया जलाया, सबको दिया पता है ना,
If you light a lamp, diya, when in the afternoon, 12 noon, and you kept it in the sun, 12 noon when the sun is up in the sky, there is so much sunlight in all directions, and you light a lamp or diya. Is there any significance of that diya? Can you see anything from that diya? Even if we can't see the light of that diya, because outside there is so much effulgence of sun that the light of the lamp diya is very light, dull. So love, if it's shown to all, then it becomes light. But that same deepak, lamp, diya, if it's used in the midnight, when there's darkness all around, then that one diya will give light in, you know, in all directions. It means it's all about hiding love. Radhaji doesn't show her love. She has hidden it in her cave of heart, locker, in the locker of her heart, of her heart. She doesn't want to give it to others. She doesn't want to share it with others. But Krishna is so clever, so smart. He stole it from Radhaji's heart. Try to understand it properly. How he stole it? First, he melted the heart of Radhaji. How something is melted? Those who in India know, 50 years before, for sending some parcel, there used to be a seal. Like if I have to send a parcel to somebody, Madhusudan Lita Mataji in Switzerland, I sent a parcel to her. So parcel will have a stamp, government stamp seal. That would be wax, candle wax. If you open it, you have to melt it. Not you can't cut it by scissors. Krishna is doing. Krishna is stealing from Radha's heart. That prem, which is for Krishna. Bhagwan is stealing that. So what Krishna did, he melted that heart of Radhaji. And when heart melted, okay, how that heart got melted? By keeping Radhaji in separation. Virha. When somebody faces virha, separation, heart melts. It cries. Those who goes through it, only they can realize it. They feel separation. That time heart is very soft. Otherwise, it's very hard. But the moment separation comes, the heart becomes very soft, tender. It melts. Krishna is very chalak, chatur, clever. He kept Radhaji, put Radhaji in separation. How he kept her in separation? By different ways. I will not talk to you. He will not go to Radhaji. Although he can't live without her. He's saying by words. He's saying by his mouth that I will not talk to her. I will not give my darshan to her. I will not go in front of her. But inside, he's eager to speak to her. He is looking for excuses to talk to her. He's trying to find some excuses to go in front of her, but he wants to keep Radhaji in some separation, So he did some drama, and Radhaji's heart melted, and Krishna entered his heart.
ये सिर्फ बातें नहीं है, These are not just some कहने की बात ये है, देखो मैं stories तो or किसी के words. हृदय में नहीं जा सकता, आप मेरे हृदय में नहीं आ सकते। You can't enter my हाँ, heart, हम I एक can't enter दूसरे को your अपने heart, हृदय में your बसा heart. जरूर सकते हैं, Yes, we can keep each other लेकिन in our फिजिकल तो हम hearts, नहीं जा सकते but किसी के physically हार्ट we में। can't enter each other's heart. लेकिन अगर मैं किसी को अपने हृदय में But बसाना if चाहूँ I तो want बसा to सकता हूँ कि नहीं? keep someone in my heart, can I do it or not? जैसे बोलते हैं गुरुजी मैंने आपको अपने हृदय में बसा दिया, Or like we say, Gurudev, I इसका have मतलब kept you नहीं in my है heart. कि गुरुजी फिजिकल हृदय It में doesn't चले mean गए, Gurudev physically went into इसका ये your मतलब heart. आपकी जो मेमोरीज, It आपकी means your जो memories. अ, चिंता है, आपकी जो भावना I है, उसको हृदय में बसा दिया। I लेकिन worry for कृष्ण you, Gurudev. I think of राधा you, जी के Gurudev. हृदय में But फिजिकली चले गए, Radhaji Krishna physically entered in the heart और of वहां पर Radhaji, क्या देखा उन्होंने? and there he saw वो प्रेम जो राधा जी ने Prem, छिपा रखा था। which Radhaji um, बस कृष्ण ने जैसे hide पकड़ा hid चोरी it. किया, So the moment he अब stole आप it, किसी की चोरी करोगे तो क्या होगा? and if you steal something from पकड़े others, जाओगे what ना, happens? You get caught. कहते हैं ना रंगे हाथ पकड़ा जाओगे। Range हाथ पकड़ना. और जैसे ही कृष्ण ने चोरी की, So the moment Krishna रूप ही stole, बदल गया, his face complexion changed. ठाकुर जी का रंग बदल गया, Thakurji's color कृष्ण complexion कैसे changed. काले Krishna is black. श्याम रंग के Sham जैसे rang, आकाश Sham में varn, मेघ होते like हुए आता है। like the clouds in the लेकिन sky. जैसे ही राधा जी के उस But the प्रेम को moment स्पर्श कर he लिया ना, touched the love of चोरी किया Radhaji, ना, गोल्डन हो गए, he became golden, सोने की तरह हो गए। like और gold, वो कौन हो गए? श्री and चैतन्य महाप्रभु। he became Chaitanya Mahaprabhu. तो महाप्रभु का रूप क्या है? So वो Mahaprabhu's roop, कृष्ण का रूप जब उन्होंने राधा जी के उस प्रेम को स्पर्श कर when दिया, he touched the love उस of प्रेम की जो चोरी कर दी, Krishna Prem in Radhaji's heart, और and चोरी he करने के stole तो it, रिएक्शन तो सामने and है he ही got है। the reaction. आप चोरी करेंगे तो रिएक्शन If you क्या है? steal something, you get some reaction as well. To every action there is So equal to and every opposite action, reaction. there is an equal and Newton's opposite third law of reaction. motion. Newton's third law of motion Is that simple? is it's very simple. तो रिएक्शन हुआ, और क्या So the रिएक्शन? reaction सब was तो दिन रात रो रहे हैं, day and night he's crying, Krishna, 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 धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर falling on he's falling on और the कृष्ण ground कृष्ण करेगा, and chanting Krishna, और Krishna. करो चोरी। इसने कहा था चोरी कर दी, So steal more. Who wanted? और Who तब asked you उनको to समझ steal? आया, And then Krishna realized, किनको? भगवान को, Bhagwan कि realized राधा जी का प्रेम क्या the है, love of Radhaji, क्या है। what it is for इससे Krishna. पहले नहीं समझ आया था, Not before that, Krishna could understand. By becoming कृष्ण को ये तक समझ Krishna नहीं could आया understand. By becoming cry, saying Krishna, कृष्ण के विरह में तड़प रही थी। she's in अब जब separation स्वयं from प्रभु हुआ Krishna. ना, So now तब when पता लगा Krishna came as राधा जी Mahaprabhu को क्यों ऐसा हो with रहा Radha था, Bhav, then he क्यों वो realized रो रही why थी, Radhaji would क्यों cry, बार बार कृष्ण के लिए why प्रार्थना she would कर रही थी, always श्याम सुंदर say आप Krishna, जाओ ना, Krishna, आप सब समय मेरे सामने रहो, Sham मैं आपको Sundar, बस you दूर से always देखूं, remain in front of me. I अपने should प्रेम always को see you. प्रकट कर रही थी। This is how she used और to कृष्ण show her निष्ठुर love. बनकर And Krishna, निष्ठुर नहीं है, वो राधा जी के प्रेम को बढ़ा रहे थे। he was just trying to increase Radhaji's निष्ठुर तो कोई love भी नहीं है, by being दोनों के hard. अंदर ऐसा एक प्रेम है He is not hard, stone hearted. जिसको Both have समझने के लिए love in their hearts. हमको साधु संग चाहिए। And to understand their love, we हम need अपनी बुद्धि sadhu से sang. समझेंगे तो By समझ our नहीं own पाएंगे। intelligence, we can't understand. कृष्ण राधा जी के प्रेम को बढ़ा रहे हैं, Krishna is और राधा जी का increasing प्रेम love of बढ़ता जा रहा है, Radhaji's और जैसे ही बढ़ता prem, जा रहा है तो और and जोर her होता love जा is रहा है, her prem is और increasing. एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जा रही है, Expectations are also और increasing. कृष्ण फिर और राधा जी को उस फेरे में डाल रहे And हैं, Krishna is putting कि Radhaji ऐसे in more कंपटीशन चल separation. रहा है So दोनों this में। this competition happening इसमें between these two actually. बड़ा कौन है, Who is superior? इसमें बड़ा कौन है, Who is superior among these two? कृष्ण और राधा जी में? Krishna and Radhaji. राधा जी का प्रेम, Radhaji's love is superior. उनका समर्पण बड़ा है, Her surrender is उनका superior. विनय बड़ा है, Her separation is उनका supreme. मिलन बड़ा है, Her meeting is सब supreme. कुछ राधा जी का भाव कृष्ण के Radhaji's भाव bhav से श्रेष्ठ is है। shresht, superior than ये है श्री Krishna's bhav. महाप्रभु जी, This is ये है Mahaprabhu, श्री गौर सुंदर, Gaur Sundar, हमारे श्री चैतन्य महाप्रभु। our Chaitanya Mahaprabhu. तो इसलिए So that's why ये महाप्रभु जी स्वयं अपने मुख से Mahaprabhu, from his lips, mouth, lotus mouth, गोपीनाथ जी ने कैसे is explaining अपने भक्त how Gopinath ji माधवेंद्र पुरीवाल जी के लिए stole खीर की rice चोरी की, pudding for इसलिए उनका नाम his पड़ गया disciple खीर चोर गोपीनाथ। Madhya Puripad. So his name became Kheer Chor ये Gopinath. महाप्रभु जी उनको सुना रहे हैं। This Mahaprabhu is तो बात कहाँ explaining. से आरंभ की थी हमने? So we महाप्रभु started Katha today कृष्ण from क्या क्या चोरी कर लेते हैं? what all Krishna can steal. माखन चोरी तो करते हैं, Butter, और हमारी चोरी क्या करते हैं? and he steals our अनेक जन्म, sins from अनेक जन्मों की time हमारे पापों immemorial. की चोरी करते Our हैं। sins from last कौन? so many births.
Krishna and ये Mahaprabhu अच्छी can बात है do ना, it. This हमारे is कपड़ों good. को हरण कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और क्या करते हैं, What else can कभी Krishna do? गोपियों के वस्त्रों की चोरी कर लेते Krishna also steals the हैं, और clothes of राधा जी की तो gopis, हृदय की चोरी। and he steals the heart of Radhaji. कोई कह सकता है Somebody can say राधा कृष्ण तो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, Radha Krishna live at Golok उनका Vrindavan. प्रेम तो वहां पर Their ऑलरेडी है, love is already there. फिक्स है, It's परमानेंट है। fixed, it's permanent, it's लेकिन जब इस eternal. भौम वृंदावन But में, when they इस come on पृथ्वी this पर earth, वृंदावन में जब आते हैं, Prithvi, Bhom Vrindavan, तो ऐसा क्यों then why कि it's राधा like जी ने this? कृष्ण को That देखा, Radhaji saw कृष्ण ने राधा Krishna, जी को देखा, Krishna saw तब Radhaji, उनका प्रेम हुआ, and then their love और फिर वो प्रेम manifested, बढ़ता चला and गया। then that love सिर्फ एक increased. इसको देखकर कुछ लोग कहते हैं Some people say कि ये प्रेम इनका नया है, their पहले love नहीं is था। new, it was not there before. ये बात मैंने क्यों उठाई? Why I have raised this कुछ topic? ऐसे लोग भी सुनने को मिलेंगे Some आपको, people, you will get to meet some people आप लोगों को, जो ये कहेंगे कि who will यहाँ say पर राधा जी और कृष्ण का प्रेम हुआ, that here Radhaji's यहीं से तो prem आरंभ हुआ, manifested. एक It दूसरे को started देखा, from here when they भावना saw हुई, each तो other. प्रेम हो They गया। got emotions and they fell in love. No. नित्य धाम गोलोक वृंदावन में In दोनों Nitya का Dham, Golok Vrindavan कैसा Dham, प्रेम है? both नित्य ही प्रेम है, love each इटर्नल other प्रेम है। eternally. ये एक दूसरे को देखकर बनाया हुआ नहीं है, This love is नित्य not ही by दोनों seeing का एक each दूसरे other. के प्रति प्रेम है। This love there is Nitya, eternal. लेकिन But दुहु जे समरस भरत मुनि माने, मार ब्रज प्रेम से नहीं जाने। चैतन्य चेतामृत में, आरती लीला में, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने एक बात कही, Krishnadas Kaviraj Goswami says some people learn भरतनाट्यम करते हैं। Bharatanatyam dance, South Indian dance. भरतनाट्यम किसने बनाया? Who made this भरत dance? मुनि, एक मुनि हुए, Bharat Muni. जिन्होंने भरतनाट्यम की रचना की। He composed this बहुत dance, हजारों created साल पुराने। thousands of years back. उस भरतनाट्यम में क्या दिखाया? It is shown नायक और एक नायिका। there's a Nayak and Naika are shown in that नायक मतलब dance. हीरो, Nayak means नायिका hero, मतलब हीरोइन। Naika means heroine. दोनों की प्रेम की बात को नृत्य के द्वारा, डांस So के the love द्वारा of both of these are shown दिखाया through a गया। dance. इसलिए कैसे बतलाएं? वो भरत मुनि जी कह रहे हैं कि That नायक Bharat और Muni नायिका मतलब is हीरो और saying हीरोइन दोनों का प्रेम एक जैसा होता है। the love of both hero and heroine are like one, समझ रहे हैं बात? similar. बहुत कम लोग समझ पा रहे होंगे, Some people might लेकिन not ये understand, सिद्धांत है but this is चैतन्य Siddhant चेतामृत का। of Chaitanya Charitamrita. कविराज गोस्वामी जी कह रहे हैं कि Kaviraj भरत Goswami मुनि is ने ऐसा saying कहा that Bharat Muni has said कि नायक और that नायिका, Nayak and हीरो Naika, और हीरोइन hero and heroine, दोनों का प्रेम both's एक love समान होता है, is at same इक्वल। level, it's equal. लेकिन कृष्णदास But कविराज जी Krishnadas कहते हैं Kaviraj नहीं, Goswami is saying no. ये तो भरत मुनि ने कहा है, This is said by हमार Bharat ब्रज Muni. प्रेम से नहीं जाने। कह रहे हमारे ब्रज की, हमारे वृंदावन की जो रीति है प्रेम की, The वो Riti भरत मुनि नहीं of जानते, Vrindavan, Braj, Bharat क्योंकि Muni यहाँ will पर not जो प्रेम है understand वो इक्वल नहीं है। because love here is not equal in यहाँ Braj. पर हायर और लोअर है, The here in ऊंचा Braj और it's नीचा। higher and lower, ऊंचा Uncha किसका and है? Nicha. Uncha is of Radhaji, बोलेगा कृष्ण का ऊंचा है, not जो Krishna. भगवान है। नहीं, राधा जी का प्रेम ऊंचा है, Radha's love is कृष्ण superior, का प्रेम Krishna's love is नीचा है। inferior. राधा जी का विरह ऊंचा है, Radhaji's कृष्ण का विरह नीचा separation है। is superior than Krishna. कल परसों मैं कथा में, Day before जब yesterday, आप लोग इंग्लिश में सुन रहे तो मैंने I तो heard डिटेल में this बताया था। Harikatha in detail. राधा जी का प्रेम ऊंचा है, Radhaji's love is superior. उनका विरह ऊंचा है। Her ये सारे गुरु जी के separation is सिद्धांत हैं, superior. All these गुरुदेव are इन्हीं Gurudev's बातों को Siddhant. Narayan Goswami Maharaj निकाल Siddhant. कर बतलाते थे, Gurudev would speak on जिससे these हमारी राधा जी के so चरणों that में, our surrender. इसलिए सारी बातें बताते थे गुरु जी। और मैं क्यों ये सब बता रहा हूँ? Why I am saying all जिससे this? हमारी राधा जी के चरणों में निष्ठा So that हो। our nishtha comes at the lotus feet of तब Radhaji. राधा जी के चरणों में जब हमारी निष्ठा होगी, तब समझ आएगा कि गौर Then लीला we will क्या है, understand this God Leela. ये महाप्रभु जी कौन है। Who is Mahaprabhu? तब ये बात अच्छे से समझ आएगी। Then we can clearly तब understand समझ these आएगा topics. महाप्रभु जी ऐसा क्यों कर रहे हैं। Then we will understand why Mahaprabhu is तब doing एक all these अलग दृष्टिकोण से, एक from a बड़े different point सम्मान of के view दृष्टिकोण से, एक with a प्रेम lot के of दृष्टिकोण से respect and love. चैतन्य चेतामृत और Chaitanya गौर लीला Charitamrita. को हम समझ पाए। We can understand Chaitanya Charitamrita. ठीक है, We can तो understand आज कथा Chaitanya यहीं Charitamrita. पर एक घंटा
Gurudev is saying, I can understand time has gone so fast. It seems like only 10 minutes are spent, but it's like 1 hour is gone. Tomorrow we will hear Mahaprabhu giving Harikatha about Khirchar Gopinath to his disciples. We'll hear it from the mouth of Madhavendra Puripad. So it's going to be very beautiful. We can't imagine it right now. Tomorrow we'll connect at the same time and hear the Harikatha further. Gaur Premanande Hari Hari Bol.